Assalamu alaikum student of class 9th. Welcome to online English class. Today we start the second chapter of Shah Abdul Latif. Now we are going to study with translation. First paragraph is Islam is the religion of peace. God sent the Prophet as a blessing to mankind. He won people's heart by his kind nature and gentle ways. His noble example was followed by many of his followers in all ages, all over the world. It was through the efforts of these saintly men that Islam spread far and wide. These holy men were extremely successful in bringing non-Muslims to the fold of Islam. इस्लाम अमन का मज़हब है. अल्लाह ने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यानी प्रॉफिट हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इंसानियत के लिए रहमत बनाकर भेजा. आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी मेहरबान फितरत और शरीफाना तरीक़ों से लोगों के दिल जीत लिए. आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बहुत से पैरोकारों ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आला मिसालों की हर दौर में तमाम दुनिया की पैरवी की. उन्हीं बुज़ुर्गों की कोशिशों की वजह से इस्लाम दूर दूर तक फैला. यही सूफ़ी लोग गैर मुस्लिमों को दायरे इस्लाम में लाने में बेहद कामयाब रहे. Now move towards verse meaning of first paragraph. Religion, मज़हब, peace, अमन, blessing, रहमत, mankind, इंसानियत, gentle ways, शरीफाना तरीका, followers, पैरोकार, spread, फैलाया, far and wide, दूर दूर तक या दूर दराज तक, fold of Islam, इस्लाम के दायरे में. Now move to second paragraph. In every part of our country, there are shrines of such saints. In Lahore are the shrines of Data Ganj Bakhsh and Mian Mir Sahib. In Pakpatan lived and died Baba Farid. In Multan is the shrine of Ghaus Bahaul Haq. In Peshawar, in Quetta and in countless other towns and cities there are the tomb of these men of God. In Sindh are the tomb of two great saints, Shah Abdul Latif and कलंदर लाल शहबाज. चलिए मैं आपको इसकी ट्रांसलेशन बताती हूँ. हमारे मुल्क में हर हिस्से में ऐसे सूफियाओं का मज़ारात हैं. श्रीन्स में मज़ारात, सेंट्स में सूफ़ी बुज़ुर्ग जो हैं हमारे उनके मज़ारात हैं. लाहौर में दाता गंज बख्श, लाहौर में दाता गंज बख्श, मियाँ मीर साहिब का मज़ार है. पाकपटन में बाबा फरीद रहते थे और उनका इंतकाल भी वहीं हुआ. इन मुल्तान में गौस बहुद्दीन का मज़ार है मुल्तान में. और
پشاور، کوئٹہ اور لاتعداد دوسرے شہروں اور قصبوں میں اللہ کے ایسے بندوں کے مزارات ہیں۔ سندھ میں 2 عظیم صوفیاء یعنی صوفی بزرگ شاہ عبداللطیف اور قلندر لال شہباز کے مقبرے یا مزارات موجود ہیں۔ اب میں آپ کو اس کی ورڈز میننگ بتاؤں گی سیکنڈ پیراگراف کی۔ شرنس مزارات، سینٹس صوفی بزرگ، ٹومز مقبرے، مزار، کاؤنٹلیس بے شمار یا لاتعداد۔ لیٹس موو تھرڈ پیراگراف۔ The great saint Shah Abdul Latif, who is lovingly called Lal Latif by his devotees, was born in 1102 Hijra in a small village called Hala Haveli. The good Mughal Emperor Aurangzeb then ruled the country. Shah Abdul Latif's ancestors migrated to Sindh during the days of Tamerlane. They had come from Gujarat. Sindh was then a center of Muslim culture, and Shah Abdul Latif's ancestors liked it so much that they decided to make it their home. But no one would have remembered their names or learned about them. If many centuries later, one of their descendants, Sayyid Habib Shah, had not been blessed with a son who grew up to be Saint Lal Latif. عظیم صوفی بزرگ شاہ عبداللطیف، جنہیں ان کی عقیدت مند محبت سے لال لطیف کہتے تھے، ایک چھوٹے سے گاؤں حالہ حویلی میں 1102 ہجری میں پیدا ہوئے۔ اس وقت ملک پر نیک، یہاں پر گڈ کا مطلب نیک ہے، ٹھیک ہے، نیک مغل شہنشاہ اورنگزیب کی حکومت تھی۔ شاہ عبداللطیف کے آباء و اجداد امیر تیموریہ کے زمانے میں ہجرت کر کے سندھ آئے۔ وہ ہرات سے آئے تھے۔ سندھ اس وقت اسلامی تہذیب و تمدن کا مرکز تھا، اور شاہ عبداللطیف کے آباء و اجداد نے اسے بے حد پسند کیا کہ انہوں نے اسے اپنا وطن بنانے کا فیصلہ کر لیا، لیکن کسی کو بھی نہ تو ان کے نام معلوم ہے اور نہ دیگر تفصیلات۔ کئی صدیوں کے بعد ان کی نسل میں سے ایک سید حبیب شاہ کے ہاں بیٹا پیدا ہوا، جو بڑا ہو کر صوفی لال لطیف کہلائے۔ جن کے والد کا نام ہے لال لطیف کے والد کا نام سید حبیب شاہ۔ کلاس لیٹس موو ٹو ورڈس میننگ آف تھرڈ پیراگراف۔ ڈیووٹیز عقیدت مند، اینسیسٹرز آباء و اجداد، مائگریٹڈ ہجرت،
डेज ऑफ टैमरलेन यानी तैमूर का ज़माना, descendant औलाद offspring, grew up बढ़ना. Okay, next paragraph. Shah Latif had a very sensitive mind. His heart was soon filled with the love of God. The beauty of nature aroused his feeling strongly. While he was only a boy, he started composing poetry. He was also keen on acquiring knowledge, and he grew up to be a scholar of Arabic and Persian. When he was 20, he married a noble and good lady. He showed great kindness of his wife and lived at home for many years. His heart, however, turned more and more towards religion and devotion, and he felt restless in living a normal domestic life. शाह लतीफ़ बड़े हसास दिल रखते थे. उनका दिल कम उम्र में ही अल्लाह की मोहब्बत से मामूर हो गया. फितरत की खूबसूरती ने आपके एहसास को तेज़ी से उभारा. जबकि आप लड़के ही थे, आपने नज़्में लिखना शुरू कर दी. आप इल्म हासिल करने के बहुत शौकीन थे और बड़े होकर आप अरबी और फ़ारसी के बड़े आलिम बने. जब आप 20 साल के हुए तो आपकी एक शरीफ और नेक खातून से शादी हो गई और आप अपनी बीवी से बहुत ज़्यादा हुस्न सलूक से पेश आए और कई सालों तक घर पर रहे. ताहम आपका दिल ज़्यादा से ज़्यादा मज़हब और इबादत की तरफ राग़िब होता गया और आप घरेलू ज़िंदगी गुजारने में बेजारी महसूस करने लगे. Now move towards meaning sensitive, हसास, अरोस जागना, acquiring knowledge इल्म हासिल करना, स्कॉलर आलिम, पर्शियन फारसी, डिवोशन वक्फ कर देना और डोमेस्टिक लाइफ घरेलू ज़िंदगी. लेट्स मूव टू 5th paragraph. When his father died, Shah Latif left his home and went to live on a mount at some distance from his village. A mound of sand is called Bhit in Sindhi due to the fact that he lived on his mound for the rest of his life. Shah Latif came to be known as the Saint of Bhit. To this day, he is famous all over the country as Shah Abdul Latif Bhitai or Shah Abdul Latif of the Mount. जब आपके वालिद का इंतकाल हो गया तो शाह अब्दुल लतीफ़ ने अपना घर छोड़ दिया और अपने गांव से कुछ फासले पर एक टीले पर रहने चले गए. माउंट टीले को कहते हैं, ठीक है, कुछ फासले पर, डिस्टेंस फासला. रेत के टीले को सिंधी में बिट कहते हैं.
بنا پر انہوں نے اپنی باقی زندگی اس ٹیلے پر گزاری۔ شاہ عبداللطیف بٹ کے بزرگ کے نام سے مشہور ہوئے۔ آج بھی وہ ملک بھر میں شاہ عبداللطیف بٹائی یا ٹیلے والے شاہ لطیف کے نام سے مشہور ہیں۔ Let's move words meaning. Mound of sand, mound of sand, ریت کا ٹیلا. Distance, فاصلہ. Due to the fact, اس بنا پر. Famous, مشہور. Okay class, so here we stop. The next paragraph will be continue in the next class. Okay, Allah Hafiz.